ब्राइटनेस ठीक है, चलो ओके। सो माय 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइंड एंड रीच एकेडमी। अपना ट्यूशन क्लासेस चालू हो रहा है ऑनलाइन। ये पहला वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स फर्स्ट। ओके, लेसन नंबर 1। द फर्स्ट लेसन इज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ यू नो वी हैव डन इन द नंबर वर्क सिस्टम। नंबर वर्क किया है ना हम लोग ने। वी हैव डन इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, all the standards you have been related to number work. Okay, number work in the sense we have done with whole number, natural number, etc etc। बहुत सारा टाइप ऑफ नंबर सीखा है, नहीं सीखा है? सीखा है, नहीं सीखा है? तो 8th में कैसा आया याद करो। सीखा था numbers we have natural number or whole number। natural numbers are number 1 2 3 4 5 up to it goes on and on and on, unlimited, infinite। okay, those are called natural number। if you include 0 also into that particular number, then from 0 1 2 3 4 5 that is your whole number। and if you consider 0 positive side 1 2 3 4, it goes on increasing, the arrow mark is there, means infinite। and on the left hand side it is -1 -2 -3, this also goes infinite। okay, so such number, this number is called integers। the positive as well as negative numbers together are called as integers। तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, एंड इंटीजर्स क्या है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज 8th 9th और 10th में हम लोग को अभी ये टाइम नहीं मिलेगा, ये लास्ट टाइम है। 9th में तो वी डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस, so you are not supposed to forget this at all। okay, now then we come across another type of number which is called as rational number। rational number क्या होता है, irrational number क्या होता है? rational number is ultimately क्या हो गया वो, p upon q, that is division or fraction you can say। okay, you have learned in your standard 6th introduction to fraction। 7th में और operations भी किया था on fractions। okay, fraction क्या होता है, it's a number divided by another number। say if p is a number and q is a number, p upon q is a fraction। now fractions are of two types, fractions are rational numbers as well as irrational number। now this concept of rational and irrational number is a very doubtful concept। even today if you ask any 10th standard student what is the difference between rational and irrational numbers, they won't be able to tell you, because ये concept लोगों के दिमाग में clear होता ही नहीं है। okay, now whatever I am going to explain you, you have to remember this for the rest of your life until you die। what is irrational number and what is rational number। पेन कहाँ गया रे मेरा, रेड पेन, रेड, चल ठीक है दे यही दे। okay, now rational number is p upon q, irrational number is also p upon q, दोनों भी fraction ही है। okay, this is division, p upon q। okay, when we have certain numbers such that p upon q where q is not equal to 0, okay, this holds very much importance। if q is not equal to 0, then only the fraction is considered। if there is any number upon 0, the answer becomes answer is meaningless because it is not defined। मैथ्स में ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही नहीं हुआ है। अगर मैं तेरे को बोलूँगा 0 चॉकलेट है, 0 में से एक चॉकलेट तू खा ले, तो उसका कोई मीनिंग बनता है? इफ़ आई टेल यू आई हैव 0 चॉकलेट एंड यू ईट 1 चॉकलेट आउट ऑफ दैट, इज इट पॉसिबल? नहीं ना, वैसा इसका आंसर भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस हैज़ टू बी मेंशन p upon q such that where q is not equal to 0, q has to be some number, non-zero number। okay, and when you have certain such kind of a fraction where you divide the numerator with the denominator, and after some definite number of steps, after some steps the answer gets complete and you get a perfect finite answer, यानी एक परफेक्ट आंसर मिलता है उसका, तो दैट इज सच नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ इर्रेशनल नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर एवरीथिंग इज द सेम, द नंबर सच दैट p upon q where q is not equal to 0। okay, and when we try to divide this number goes on recurring and is never ending। so where you divide and you get a never ending number or an infinite number or a recurring number or non terminating number, ये जितना टर्म्स यूज़ किया इसमें से जो तुमको प्रेफरेबल है वो टर्म अपने दिमाग में डाल लो। where you get an infinite answer, recurring answer or a non terminating answer, okay, such numbers are called irrational number। I hope
this particular explanation about rational number and irrational number is the easiest which possibly I can tell you. इससे easy और कोई explanation नहीं हो सकता है. The fraction which on dividing gets an finite answer means after a definite number of steps it gives you a precise answer. That kind of fraction is called rational number. And if irrational numbers are the fraction where on dividing you get an infinite or a recurring number, so the answer is never ending. Such recurring, हम लोग बार डालते हैं ना, नंबर के ऊपर बार डाल देते हैं एक छोटा सा to represent recurring numbers. Such numbers are called as irrational numbers. Now the next thing what we are going to study on this in this lesson is how to represent rational numbers on a number line. Okay, नंबर लाइन के ऊपर हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 होल नंबर एंड इंटीजर्स किया है. ओके, बट इफ समवन विल टेल यू हाउ विल यू शो 1/2, 1/4, 1/8, 1/10 on a number line, so this becomes very difficult. Okay, now how to do that if you have to show that on a number line? Okay, just see how I have shown half, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2 बराबर. Okay, लेकिन how I have done this? Now let me explain. Okay, now if you have to denote an irrational number such that 1/2 or 1/4 on a number line, so what you always have to do is the distance between 0 and 1. Okay, the distance of 1 unit, say 0 and 1, this distance, if the denominator is 2, look at the rational number what you have to show it on the number line. If it is 1/2, so 1/2, if you have to show this, then the number you have 0 to 1, this particular distance, denominator is 2, you have to divide this distance into 2 part. Okay, so this becomes 1/2, 1. Similarly same distance के ऊपर 1/2, this 2/2 becomes 1. Okay, then 3/2, 4/2 becomes 2. This goes on, which we have seen here. Okay, now the same thing is 1/4. In case of 1/4, okay, let's not take another diagram, let's take this distance is also, okay, the coordinate is -1, the distance is 1 only. Okay, distance cannot be negative, साइंस में किया है हम लोगों ने. So even if that is the distance between 0 to -1, the distance is always considered positive as 1. Okay, so now if you have to show 1/4 on this, so you have to what you have to do is you have to divide this particular distance into 4 equal half. 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया. This becomes 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 becomes 1, and 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 becomes 2. समझ में आया? Accordingly you have to do. Now let's say if you have to represent 1/10 or 3/10 on a number line, how can you do that? Well, we have seen this example always, every day, mostly every day in our life. कैसा देखा है हम लोग ने? Have you looked at your ruler, scale जो होता है तुम्हारे कंपास बॉक्स के अंदर, देखा है कभी ध्यान से? If there is 1 centimeter distance 0 to 1, it is always divided into 10 small equal parts called millimeter. बराबर. वो लोग कैसा करता है 0 to 1, अगर उसमें 1/10 दिखाना है तो they divide 0 to 1 into 10 equal part and then they can show. Okay, अपना स्केल उठा के देख लो, स्केल निकालो, देखो उसके ऊपर 0 to 1, चाहे इंच में इंचेस साइड रहेगा या सेंटीमीटर साइड रहेगा, दोनों के अंदर it has been the distance from 0 to 1 is or 1 to 2, the distance in between is always divided into 10 equal half. So you can say 1/10, 1/20, you can show it on the number line accordingly. जितना जो भी डिनोमिनेटर रहेगा. Okay, always remember how to show a rational number on a number line. You always look at the rational number, look at the denominator. The number given in the denominator, whatever the number given in the denominator, you have to divide the distance of 1 unit into that many number of equal part. Denominator में 2 है
तो 0 to 1 में 2 टुकड़ा करो। अगर डिनोमिनेटर में 1/4 है, ओके, डिनोमिनेटर 4 है तो 0 to 1 में 4 पीसेस करो। 1/6 है तो 6 पीस करो। 1/10 है तो 10 पीस करो। 10 पीस का एग्जाम्पल मैं अभी इधर ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा। So that example if you want to see, just pick up your rulers and look carefully, watch carefully the ruler, how it is, how the distance has been demarcated on your scale 0 to 1, and just see the minute small lines in between. 10 इक्वल पार्ट किया है नहीं किया उसमें, तो 1/10 उधर। अगर मैं उसमें से बोलूँ कि उसमें 3/10 कौन सा है, 6/10 कौन सा है, 7/10 कौन सा है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। बराबर। चलो, now the first exercise what we are going to do is, introduction of this chapter is over. Now we'll start with practice set 1.1. okay, now practice set 1.1, the first problem itself is, I don't have a textbook right now. okay, तो चलो गाइड से ही क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में द फॉलोइंग नंबर, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या नंबर दिया इन लोगों ने? 3/2, 5/2, 3 ओके। नाउ हाउ कैन यू शो दिस? वी हैव ऑलरेडी टेकन इट इन एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में लिया है हम लोगों ने, ये लिया था ना, 1/2, 3/2, 5/2 दिखा, किया है हम लोगों ने। डिनोमिनेटर वॉज 2, सो वी डिवाइडेड डिस्टेंस 0 to 1 unit distance into 2 equal part, and accordingly we have plotted all the things. okay, now उसमें जो नंबर दिया हुआ है 1/2 सर्कल करो, 3/2 को सर्कल करो, 5/2 को सर्कल कर दो, and your problem is solved. okay, so I'll not waste time into this problem. first पहला problem तो we have already solved. the second, third and fourth, okay, इंस्टेड, मतलब इसमें सॉल्व कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग खपाने जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इट्स ओनली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग, यू जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम नंबर 2, 3 and 4. ओके, इट सेज 7/5, 0 to 1 का डिस्टेंस देखो, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट, हैज़ बीन कट डाउन इंटू 5 पार्ट्स। बराबर। नाउ दूसरा क्या है, -5/8, डिनोमिनेटर इज 8. Look at the distance between 0 to 1, it has been